सर अनम्यूट करो। अभी क्लियर है? यस सर, थैंक यू। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। बोलिए, व्हाट आई वाज डूइंग। क्या हो गया? शॉप है मैडम। ए मार्क्स फॉर व्हिच पेपर यू आर सीइंग? हिस्ट्री। अच्छा, इट्स ओके, इट्स यू हैव ऑलरेडी टोल्ड द मार्क्स। टेल मी व्हाट I was doing last class. Absent. Why? Gone to 11. अरे अभी बारिश स्टार्ट ही नहीं हुआ। With friends. Oh my God, cutting my lectures. That's not allowed, man. तो क्या हो गया? लोनावाला में जाके मनाया। ये सच बोल रहा है? एक मिनट, सच बोल रही है? You should be paying like wait. हमको क्यों जोड़ते हैं? हमको क्यों नहीं बुलाया? है ना रे? हमको क्यों नहीं बुलाया? ये थोड़ी सी टेंशन में सर है। नेक्स्ट टाइम वो नहीं जाएगा। Okay, in economics, we had finished the chapter 1, 2, 3. What is this? Only 1, 2. Are we starting a new chapter today? Oh my God! What is that heading I was doing? Availability of efficient. But what was the characteristics of labor? Correct. Characteristics of labor. Those are factors affecting this. वही मैं पूछ रहा हूँ। चलो वो ऐसे रहेंगे। Productivity of labor. Did I give the meaning around productivity? Then tell me the meaning. Who was absent? You will tell me. Wait. Productivity of labor, ना? दूसरा तो है। तो फिर labor क्या बोल रहा है? Correct. What's his name? बड़े लोनावला बोल जल्दी meaning बोल. Tell me the meaning. Did he copy it on the notes? Sure. How much notes did I give? Only take the book. Go out to the office, write and come in. तब तक हम तेरा लोनावाला का बर्थडे का बूथ उतारते हैं। जा जल्दी जा। तो पहले क्यों नहीं पूछा उससे? Go to the office and quickly come in. उसको पूछता है, वो बाहर खड़े रहता, मैं आने के बाद मुझे पहचानता नहीं। मैन गो टू द ऑफिस जा, और ये मेरा ये काम भी कर दे, जा वो दे दे उनको। हाँ, नो, यू शुड नॉट गो विदाउट टेलिंग मी। इवन इफ यू गो, क्या दे रहे थे? मैम ने मुझे थोड़ी बोला था। क्या? यू शुड टेल द कंसर्न टीचर। Only one person is said, even she doesn't want to sign. तो आज तेरा क्या sign? जल्दी कर, write the notes. Which point I was doing? Done. No more points. What is the next heading? उनको मान दो। तू इधर करो सर। इधर रखने का था, उसको बुलाता था। Tell me the next sentence. I think chapter is done then. Correct. Factors affecting productivity of land. How many points? I think we have completed. Let's start with labor. So correctly बोला है सर ने. So it is labor. So write down the intro of the chapter. But Maharashtra rainfall is already stuck. Only इधर किधर चले गए? लोनावाला में कैसा निकलेंगे? हाँ तो उसी का ही पूछ रहा हूँ। मीडियम लिया है या लार्ज बोला था किसी ने? मीडियम लिया है? बोला ना मीडियम था किसी ने? क्या अच्छा उस बारे में बात नहीं। I understood. Okay, so who can tell me labor? What do you mean by labor? Wait. Any work done by person. Because she's chopping with the answer and stopping it. All women girls.
ये हटा के बोलो ना, कुछ नहीं समझ में। Very good. It is all human work, whether it is mental or physical. Can I write the word physical? And then with a viewpoint of the person at time, good one, good one. With the viewpoint of earning a fixed income. Am I correct? So I'll put Y at a given point of time. Is labor and laborer different? I'm saying labor and laborer different. How different? Let Bhumika tell me. She's saying laborer is the person who is not working and sleeping like you guys. Am I correct? And labor is the work done. Anybody have difference of opinion? Pakka. But if I say, okay, so she is saying the person. Can I use the word owner? Is he the owner of work? Yes. Can labor and laborer? I'm saying labor and laborer. Are they inseparable? Are they inseparable? Let us have him. Because without laborer. No, first of all, you say, are they inseparable? Huh? Somebody told me yes. Because laborers cannot order to work. ये कौन सा ऑर्डर का बात कर रहे हो? मेरे से बोलना मैं ऑर्डर Without laborer cannot produce or cannot done a work. तो स्टार्ट कर दे फिर छोड़ देते कौन सा इंजन पे काम करता है? हाँ, wait, let Bhumika answer. She is good, huh? All the answers prepared. Good girl. Yes. She is saying yes, they can be separated. No, inseparable. Inseparable. हाँ, एक मिनट जरा. हाँ. Why Bhumika thinks inseparable? Does the work na? He doesn't does the work. Okay, good. ये क्या हैंड एक्शन ऐसा मैं क्या मेरे नानी में ऐसे बात करती है. Now look at her hand action. तो वही मैं पूछ रहा हूँ why. Labor is done and the labor is not there. Okay, I understood. Good girl. Anything want to more? Somebody told me, sir, it is like a body and a soul. You understand what is a soul? What is a soul? Inner spirit. क्या ऑर्डर में भी मिलता है 40 रुपए का. अभी मंगाए मैंने. Spirit. हाँ? 45 रुपए का बॉटल. और क्या? मुझे कुछ कम मिला तो सस्ता है तो बोल. Thank you. Attendance is there. So what is the soul? Okay. Which functions the body? Which functions the body? क्यों? वरना क्या दूसरा कुछ स्क्रू डाल के निकलता है क्या? So you have to tell me very simple. When the labor is done, the laborer has to be physically present. ये बोला किसी ने? ये क्या? ऐसा वही बोला था? ये नहीं बोली ना वो नहीं बोली. फिर क्या ऐसा मास डाल के बोले तो what will understand? It's very simple. उसने वही बोला था but our code language I did not understand. Okay, no, it's okay. So when I use the word labor and laborer are inseparable because both has to be physically present. Forget about mentally. वो तो हम लोग भी नहीं रहते mentally. Are you there mentally present today? Confirm. So shall I put a surprise check? अभी तो बोला. Surprise test of the first chapter. Economics, productive mechanism. No need. No, I know. You are mentally present with me. So when I use the word labor and labor, they are generally inseparable. One more other characteristics which you will write. Labor is highly perishable. Do you accept? Highly perishable. First of all, tell me the meaning of the word perishable. So next day you will come and do the work.
मतलब क्लास है कि हम दोनों के लिए, लोग सब ऐसे ऑडियंस की तरह देख रहे हैं चलने से। कम ऑन टेल मी, हाँ शर्मा रहा क्या है, इधर से लड़की थोड़ी बोल इधर, एक मिनट हाँ ये गैंग लीडर है नीचे, क्या डिस्कशन चल रहा है? टेस्ट तुम टेस्ट कर, टेस्ट समझा समझा। So when I'm saying the word, बोल जल्दी, तेरे लिए वेट कर रहा हूँ। Destructible, destructible. Oh my God. Any idea, man? Is it perishable? First of all, everyone says perishable. Yes. If I say not perishable, I can prove that also. Yes. As she is trying to say, today I do not come and take the lectures of you. That lecture I will recover, maybe now some other day. But today's time is done, wasted. So I think students' life has very important of time of management. But we understand more of TP, है ना? बस थोड़ा एक 5 मिनट में थोड़ा लेट किया TP चल. What is the meaning of the word management? Whatever time available, utilize minimum for the studies and maximum for the masti. Am I saying correct or saying ulta? Correct only. That's why you're doing this only. Before the test, one day you turn the pages. अरे ये कौन खड़ूस रखता है टेस्ट? सर ये चैप्टर में इतना सारा डाउट्स है, मतलब कभी ये टेस्ट कल मॉर्निंग में है और आज बच्चा शाम को 6 बजे मेरे से पूछ रहा है. That's natural. मैं भी ऐसे ही करता है ना? If you do not do one day's work also, the other day will be some other work you can do, but you are losing that work. So on that reason, labor is highly perishable. I can add one more character also. What is that character? Labor is generally mobile. Do you accept? Is it a highly mobile or least mobile? Highly mobile. What does it mean? To a certain extent, the labor is ready to move from one part to another. The time was there, then people used to come from Pune, stay 1 week here, and then go back to their house. But transport has become so easy, they come every day. है ना? लोग मालूम नहीं? हाँ, इसमें क्या है? People come all the way from Roha, Panvel and Roha. आपने सुना है? वो रोहा का लाइन डाला है. रोहा is how far from here? पनवेल का आगे एक गांव है. वहां से मॉर्निंग में वीटी में जाता है, काम करके फिर रोहा जाता है. सोचा आधा टाइम तो बेचारा ट्रैवलिंग पे जाए. I remember my own college, which was somewhere in Dadar. I will be getting up early morning 5:40 to catch a local 6:20, and then I have to reach my college by 7. But I have heard people come from Badlapur for 7 o'clock class. That was I'm attending. When I used to take lectures also, there were 3 or 4 girls. They used to come from Wangini. Suna Wangini? Badlapur se bhi aage bolte. हाँ बदलापुर से भी आगे. My morning lecture बदलापुर नहीं मालूम है. जिसपुर में बदला बहुत लेते हैं. वो एक मूवी भी तो आया बदलापुर. बदलापुर you guys don't know? हाँ देखो इसको मालूम. Very far ना. हाँ वो एक नेरल करके नेरल माथेरान. हाँ नेरल माथेरान. नेरल you have to get down and माथेरान you can reach. उसके भी आगे. So why I'm saying traveling has become so comfortable, so quick. Generally present labor is mobile. But एक time था, it was not mobile. Why not mobile? Transportation facility नहीं था. अभी बुलाकाट में अगर मैं तुमको बोला मॉर्निंग लेक्चर आने के लिए, बोला कि उठा नहीं मैं क्या करेगा. Like this child I really appreciate. Without taking her name, I've told her name in all the branches. मेरा एक बच्ची economics के लिए सानपड़े से इधर भाग गया. Although that brings and take, that's okay, but she's ready. So this is what we say, we are generally today very, very mobile. What does it mean? Since the transport is better, now I'm ready to travel to a place where earlier I will not be traveling. Why? I'll be getting good payment there. That's the only reason. Is it okay? So is there any other characteristics which there in the textbook which I missed it? Let us take, oh, sorry. It is an active factor of production. Who can convince me it is not passive? Wait, San has to take some rest. वो अकेले बच्चे ने क्या ये लेके रखा है? ओए, बोले. I don't know बोले तो then I'll send you out only.
एक्टिव फैक्टर का मतलब क्या है? हाँ यस, अरे थोड़ा तो बोल सकता है ना. व्हाई डू गेट इनटू द बुक? देखो मेरे हाथ में बुक नहीं है ना. हाँ हाँ ठीक है, मैं क्या करूँ उसका. हाँ एस भूमिका. सो व्हाट? उसके बिना नहीं. अरे आजकल तो मशीन आ गया ना. बट जो मशीन को ऑपरेट करने वाला भी लेबर ही रहता है. मशीन के अपने आप जाके स्पेयर पार्ट उठाएगा. नाउ वी हैव रोबोट्स व्हिच टेक्स द कमांड. ये जापान करता है. दे टेक द रोबोट फॉर द हाउस होल्ड वर्क. अभी हमारे घर में अगर रोबोट हाउस होल्ड वर्क आएगा तो हमारा बच्चा उसको दिन रात छोड़ेगा ही नहीं, है ना. So why I'm saying today we are becoming more mechanized. Everything is machine. Automation बोलेंगे economics में. सुना है automation? Automatic बन गया है. But then labor has to operate that machine. No doubt you remember the movie called Terminator in Hollywood. Okay? So what does that Terminator shows you? What does it shows you? Fight between the man and the machine. The boy programs that particular fellow. And he comes and protects him. Okay, TX family ना, वो TX family उसका जो opponent रहता है. I really love the character of that police, the fellow who really tries to chase that John. Is it John? Nice. So whatever the machines have introduced, but the machines are going to work only with the active involvement of whom? Of the labor. Is it okay? Is there any other factor we have? Labor? Efficiency. How do I define efficiency? I don't understand. I put it very simple. All my students are very efficient. He might be more efficient. He might be a bit less efficient. She might be very, very efficient. She might be best efficient. फिर मैं पूछेगा what is efficiency? What is efficiency? Properly तो सब लोग ही करें. Faster तो machine भी करेगा. What is efficiency? The time in which you finish the work. She might finish making one chair 2 hours. She might finish that same work in 1.5 hours. These two guys can finish the chair, same chair, quality, quantity, size, everything in half an hour. Why? इनको काम ही वही है, दिन रात वही करते रहते हैं. I become more efficient. I've seen certain people in the shops. How do they do the work? भाई साहब आप तो बहुत फास्ट करते हो, 15 साल यही कर रहे हैं. So we always believe efficiency is nothing but the time you take to complete a given task. One might take a little bit more time, one might take a less time. Is it only the time factor? It is also the perfection. You understand perfection? Yes. So that is efficiency. So can we start writing notes, or you want me to give? Less mobile. That's what I'm saying. Not fully mobile. Sometimes if he doesn't get with the transport, he'll go. But every time he doesn't want to be mobile because he wants to station himself to a nearby area only. Mobile hai, but utra nahi. What is bargaining power? Anybody? Bargaining power and purchasing power are two different. Purchasing power matlab hamara currency ka value. Bargaining power, when I am trying to employ myself in one, I will be asking per hour kitna denge aap mujhe. Samajh mein? But then why does he not bargain too much? ये आपका कि economics नहीं, ये philosophy है, ये psychology आप जो बोलते. He is backed by a trade union. You understand trade union? Trade union, union. अरे हर एक फैक्ट्री में यूनियन होता है कि नहीं? सुना ही नहीं है. टीचर्स यूनियन सुना है, स्टूडेंट्स यूनियन सुना है, हाँ सुना है. There's a party called ABVP. You guys are so less knowledgeable. What is ABVP? हर स्कूल में नहीं है, sorry, कॉलेज में है. It is called as अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. ये स्टूडेंट्स का यूनियन है. हमारे कॉलेज में ये बहुत एक्टिव था. दादर और माटुंगा के बीच में हमारे यूनियन के मेंबर्स लोग ने जाके पूरा ट्रेन को 1 घंटा रोक दिया. ड्यू टू सम फाइट बिटवीन हमारा कॉलेज का जो वॉल था, कैंपस वाला, नॉट मेन वॉल, एंड माटुंगा रेलवे का. उन्होंने बोला हम नहीं देंगे
तो हमारे स्टूडेंट्स लोग ने जाके पूरा ट्रेन को जाम कर दिया। वो दूसरी बात है कि पुलिस लेके गया अंदर, फिर आई थिंक हमारा प्रिंसिपल इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फेलो इन द अदर एरिया, वो जाके सबको बाहर लेकर। Why I'm saying this is nothing but a union. So when I'm saying labor has a weak bargaining power, he cannot talk to the management in the way in which he will increase the salary. Who can bargain best? The union. समझ में आया? Why labor has a weak bargaining power? अगर आप ज्यादा मैनेजमेंट से बोलेंगे मुझे इतना चाहिए, इतना ही मैं काम करूंगा, मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है सर कंसिडर करेंगे सर, आप चाहिए उतना ही बोलेगा ना, you will better consider it. But यही बात अगर यूनियन बोलेगा, they have to accept because union is a big body. यूनियन बोलेगा इतना पेमेंट नहीं देगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल से तेरा फैक्ट्री में एक भी लेबर नहीं आएगा। यही स्टेटमेंट अभी आप बोलते हैं, आप इतना पेमेंट नहीं देगा, कल से मैं जॉब में नहीं आएगा, वेरी गुड, ऐसे भी तुझे लात मार्केट निकलने के लिए ट्राई करता हूँ। अभी समझ में आया why does he have a weak bargaining power? As an individual labor, he cannot influence, to a certain extent influence कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। But then the union comes in. Union might take up a bargaining which the labor cannot do. I remember when I was working in Toronto, they given me two options, either a government, semi-government, or a unionized company. बोला उसने, बोला ये कौन सा कंपनी है, आपका सैलरी में से हर महीना $30 वो यूनियन को चले जाएगा। मतलब what should I give $30 from my salary? But if any ifs and buts happen with the management with you, the union will fight for you. No need you. इनफैक्ट वैसा कंपनी में अमेरिका में ज्यादा सेफ्टी है, क्योंकि ये कभी भी उठा के आपको निकाल के बाहर देते हैं। फिर हमारा इंडियन की तरह डायलॉग मतलब पिछले 15 साल से मैंने काम किया आपके लिए, 15 मिनट में निकल गए, तो दे डू नॉट हैव एनी एफिनिटी। इंडिया में तो थोड़ा एफिनिटी है, हाँ मेरे लिए इतना साल काम किया, ठीक है सर। देयर नाइदर द एम्प्लॉई नॉर द एम्प्लॉयर हैव एनी एफिनिटी, काम ही उनका वैसे ही, करेक्ट। So generally when she is trying to explain, she was explaining the bargaining power of the labor. He has it, but in comparison to whom? Union, he does not have a strong bargaining power. समझ में आया? Is there any point that we miss? All the points we have covered. All right. You have a doubt or a point to explain? What's it? What's it? Demand for labor is derived. A derived demand. Hey, what is derived demand? What is derived demand? Demand chapter अभी आएगा. I have to teach you some diagrams. We have derived, उधर ही लिख लो, indirect demand. Derived means indirect demand. Means if a labor is producing a shawl, I'm in fact referring to a shawl which comes from J&K. Have you heard about this J&K? Shawl का नाम तो बोलो, very popular. Where is it? What's it? What's it? Kashmir only. You said the name of the shawl only. Pashmina shawl. The entire, I mean, I'm not wearing a ring. Entire shawl can be passed through a small ring, but woolen है वो, इतना soft है, silk से भी ज़्यादा soft है। फिर आप पूछेगा क्या सर फिर विंटर? बिल्कुल। It is a very special kind of a sheep, only found there, and उसका पूरा बॉडी का हेयर यूज नहीं करते उसके लिए, ओनली वो नेक में एक छोटा सा सेक्शन रहता है, उतना ही एक कोट से मिलता है। So I will demand the labor who is producing the shawl. When I stop producing the, when I stop demanding the shawl, what will happen to the labor also? No demand. As long as that product that he is manufacturing is demanded, he is having a demand. जब हम लोग बोलते नहीं सर शॉल नहीं चाहिए मुझे पसंद नहीं, am I demanding the labor? I am stopping the demand for shawl. Automatically उसका demand भी खत्म. So directly मैं labor को demand नहीं कर रहा हूँ. It is the product that you manufacture and sell it to me. When I stop buying it, your demand also going out. So it is direct or indirect. समझ में आया? Can you give me any other example? जिसमें से मुझे पता चलेगा you guys have understood direct, indirect demand. बोलो. I don't know. यार मेरे ही दोषी के साथ तुम कुछ खेल रहे हो। तो दूसरा कोई स्टूडेंट आएगा ना,
Oh, दूसरा है, don't worry. किसने करा? कौन फैला रहा है? दो लगाऊंगा ना. अगर अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा भी काम मत कर बेटा. या अभी हमारे ही रोजी पे हाथ लगा रही है. बैड फेलो. हाँ, डिमांड ऑफ आई डिडंट हियर. नोकिया, वो क्या होता है? फोन. इन मलयालम नोकिया मतलब तूने देखा क्या मुझे? है ना, नोकिया. हेलो नोकिया. डिमांड फॉर द मोबाइल फोन्स. व्हाई ओनली नोकिया? करेक्ट. नोकिया का वैसे भी ज्यादा डिमांड नहीं है. एक टाइम था वो बेचारा, वो कौन सा कंपनी है उसका भी नाम बोलता हूँ, इंडियन कंपनी ने टाइप करके लिए. which one? Still I can't hear. अच्छा, बीबी. बट बीबी तो मैंने आज शायद ही किसी के हाथ में देखा. पहला मेरा प्रोफेसर साहब रखता था. क्या है? बीबी है मेरे सर, घर पे नहीं है. वो बीबी नहीं, दूसरी बीबी है. दूसरी बीबी हाथ में लेके घूमा. ब्लैकबेरी. तो ऐसा बोलो ना सर, क्यों बार बार बीबी? वन डे ही केम, चल मेरा बीबी किधर है? मतलब घर पे. अरे वो नहीं, छोटी. मतलब छोटी कौन सी छोटी? So like she's saying, BlackBerry is considered to be one of the best executive phone. Now even BlackBerry we have touch screen also. Even I plan to buy it, but मतलब बाद में जब अपने को उतना काम नहीं है ना. I'm not a company executive. जो बैठे ये mailing ये वो करते रहते. So as long as you demand BlackBerry phone, the labor. वैसे तो सारा मोबाइल फोन एक ही है. Why only BB? You like it? And then why do you want it? नहीं पसंद है उसी की वजह से. So we at least understood. Shall we start writing? Is there any part of the chapter you want me to explain? Quick. No. I'm asking any more doubts, characteristics, because ये सब मैंने already किया है. Labor पूरा किया है ना. Characteristics में कोई point नहीं है. चलिए, let's start writing. Write the introduction. Meaning. Labor. पहला मीनिंग आएगा ना, तुरंत कैरेक्टर. मीनिंग तो लिखेगा तो बोल. रेफर्स टू collection of all physical and mental capital. Physical and mental efforts. Collection of all physical and mental efforts used in the production of a given commodity. Used in the production of a given commodity. Full stop. So it simply means. Any effort, huh? Boy, you have to write. Or exertion of mind and body. Any effort or exertion, EXER, of mind and body undergoing or undergoing partly or fully. Proper class में भी ऐसे बताना ना, partly or fully. To produce a given set of commodities. To produce given set of commodities. Produce given set of commodities. According to Marshall.
You write the line exactly. Okay. Then you join with her. According to Marshall, because it is given neatly there. Then I'll explain the definition. According to Marshall. What's the full name of Marshall? तो मैं वही पूछ रहा हूँ not you. Alfred Marshall. You show the or you join with them for that. It's did you find out? It's there in the first page only. हाँ but उसका पूरा नाम मुझे मालूम है. उसका आधार कार्ड भी Alfred Marshall. वाह सर अरे सच्ची अरे ऑनलाइन में Alfred Marshall आधार कार्ड they have a SIN number, SIN, social insurance number. Oh my dear son, join here. It is there. Okay, invitation. She's searching submit on the left. So when is Sadhu calling you? When is your Sadhu calling you? Oh, समझ गए? साधु भी है ना पूरा एरिया को चौकअप करते हैं पहले वो बिल्डिंग बनने से पहले वो कैसा था देखे क्या साधु बॉर्न कर मैं क्या उसके साथ थोड़ी बॉर्न हूँ वो एरिया में जब स्कूल नहीं बना तभी बोला साधु वास्तु तो आई वाज आल्सो नॉट That school is not so old. Narrative is new. Only Americans are new. Sadhu was from written. Learn it quickly without seeing tell me. Shall I? Any exertion of mind or body, actually ये मैंने भी दिया है ना, partly or wholly with a view to some good other than pleasure derived directly from the work is called labor. Will you able to learn this? क्यों? देखो, we'll make it easy. पहला जो line है वो तो easy है. Any exertion of mind or body वैसा learn करो. Undergone partly or wholly. वहाँ तक learn करो. Learn. Silently learn. Everyone learning with me now. Any exertion of mind or body undergone partly or wholly. वहाँ तक learn करो. Then what is the next line? With a view to good, है ना? With a view to some good other than pleasure derived. ऐसा learn करने का. With a view to other than pleasure derived. Directly from the work is called labor. इतना ही तो है. I have divided the definition into 3 parts. Learn like that. Because it's big and you want to learn also. And 110 times you will forget it. I'm helping him to learn. He's asking me why also. Achha, you learned? Oh, good. Tell me. Don't laugh. Seriously. Some good Other than pleasure directly. Oh, at least other definition बोल दिया. Yes, Bhumika. आपने wholly and fully वो नहीं बोला ना. ठीक है, at least she has also said 60% of the term. I'll let him. You say, come on. देखो, when you fumble in learning, na, then you will not learn. Clear cut learn karo. Then it becomes easy.
duty of party, correct. we work some good other than ये क्या है? तो आधा तो उधर ही देख के ही बोल. Yes, yes, this girl, San. जाने दो, opening ही खराब. No, no, I would allow you. Yes, my dear boy. हाँ. the body, mind the body, party or Correct. of some word other than pleasure. Derived from the same. Very good. बस इतना ही तो चाहिए. देखो भूमिका ने एक ही लाइन शॉर्ट में बोल दिया. तो मुझे मत देखो उसको. अरे डेफिनेशन है लेबर का, तो बट लिखना ही तो पड़ेगा. अच्छा तुमको क्या दिया, यही क्या है तुम्हारा टेक्स्ट बुक में? ऐसा नहीं चलेगा. बट तुम्हारा टेक्स्ट बुक में क्या दिया? जस्ट चेक चेक चेक. तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक इज बैड इज इट? ये लर्न नहीं हो रहा है. 3 बार ट्राई किया, फिर मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने लर्न कर. as if you don't want to learn. Wait. हाँ, yes, this boy. Undergoes. Undergone है. Good view. यार तू लोनावाला अभी तक बोला नहीं. हाँ ऐसा ठीक है. हाँ ठीक है, जाने दे. आधा ही लर्न हुआ. San want to? No. Then tell me what is there in the meaning. Since you are correct only, what is there in the meaning in your textbook? वो भी तो बताओ. बट बोर्ड एग्जाम में थोड़ी साधु वासवानी का अलग करेक्शन होगा, इनका अलग, सब एक ही होगा. वो स्कूल का नाटक है तुम्हारा. आई एम ट्राइंग टू मूव अवे द स्कूल फ्रॉम माय एरिया. गाड़ी लेके इधर आना जाना बहुत तकलीफ है ना रे. तेरा पापा को बोल. आज आया हमारे एरिया में पॉलिटिशियन, मालूम है देयर इज सम बिग फंक्शन गोइंग ऑन. तो पांडु हवलदार की तरह कोई बड़ा गाड़ी में उतरा. पूरन में फंक्शन. हाँ वही पूछ रहा हूँ, तेरे ही मुझसे सुन. पूरन में क्या करना? एनसीपी व्हिच पार्टी? यस मैन, आई एम लिसनिंग टू यू. वेस्ट. रहने दो, अगले हफ्ते. ये मेरा टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं लर्न नहीं करता. मेरा टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं लर्न नहीं करता. गुड. शी हैज सेड दी एवरीथिंग ना. तुम लोग दोनों सुना ना? खुद नहीं बोला. ओए ठीक है, जाने दो. एक काम करते हैं. सिंस दिस गर्ल इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम सैन पैरा and we are giving a little bit difficult. Simple definition कर लें. There is page number 22. According to Professor Marshall, अब ये भी उधर Alfred Marshall और ये भी Marshall है. By labor is meant, don't write, economic work of a man, whether ये भी नहीं चाहिए. Labor consists of all human efforts of body or mind. ये ठीक है, लिखो. According to Thomas, open inverted comma. ये बहुत इजी है एक्चुअली, ये देना था मुझे. लेबर कंसिस्ट ऑफ, ओपन इन्वर्टेड कमा, लेबर कंसिस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और माइंड. लर्न ऐसा करेगा इजी हो जाएगा. ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और माइंड undertaken in expectation of a reward. Undertaken in expectation of a reward. Of a reward. ये तो इजी है. ठीक है, रिलैक्स. Types of labor.
राइट डाउन। सिर्फ हम लोग लिख देते हैं, डेफिनेशन शायद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। फिजिकल एंड मेंटल लेबर फर्स्ट, राइट। ए फिजिकल एंड मेंटल लेबर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। 2 skilled, semi-skilled and unskilled labor. Skilled, semi-skilled and unskilled labor. Next, ये भी है या नहीं है? Oh, smart man. ये पहले मैं भी देख लेता हूँ क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में these guys are going to pump you up. It is there ना? What is it? थोड़ा थोड़ा reduce किया है, but उतना नहीं है, but everything is there I think. Labor देखो, meaning and characteristics है, division of labor भी है. Actually types नहीं है. अच्छा, meaning, type and advantages, correct है. Types है. Then what did you write? Professional and administrative labor. Next, professional and administrative labor. Next, productive and unproductive labor. Productive and unproductive labor. Next, employed and unemployed labor. Employed and unemployed labor. Employed and unemployed labor. Next, wage and non-wage labor. That's it. Then characteristics, is it there? Yeah. Now I'll give the book to you. We will write only the what do you call it? The example, and I'll explain you what is it. But before to that, let me check whether they have given meaning and characteristics, division of labor भी है, meaning, type and advantage. Come on. First one. What is physical and mental labor according to you? Physical labor is what? Where you are putting your physical qualities are lifting, working. Normally, who example construction, construction and factory workers. Mental labor, generally clerks. We also teachers, है ना? Actually, वो country में लोग clerks नहीं बोलते, they call themselves administrative assistants. ये क्या होता है? अभी जैसे हमारा जो बंदा के सब करता है, हाँ, हम लोग वो वर्ड नहीं बोलते. It is a disrespect to them. Office helper, office assistant, because that's I really like them. They have highest respect for a person who is working below. और हम, जरा ऐसा बोलते कि नहीं? You go to a hotel, how do you call that fellow waiter? Excuse me, come please. And we don't और हो गया क्या? वो भी ऐसे ही पूछते हैं, है ना? क्या चाहिए? बोले गरम क्या? सब बोले और गरम क्या? और गरम क्या? तवा. So we politely talk to the labor, they also talk to us politely. अभी उनका language ही वैसा है. So when I'm saying the word mental and physical, where is exertion more? Mental में नहीं है. देखो, physical good thing, he is not going to apply his brain. Mental good thing, he is not going to apply his body. Only the where you get more tired, physical labor or mental labor? दोनों में tired. दोनों में ही tired होता. I have my area one friend. He was telling me in the place where I go for a little bit of muscle building. तो बोलते हैं, सर आप मालूम है क्या? मेरा MBA से पैकेज लग गया, कितना 40 लाख का लगा.
एनुअल एंड पूरा जिम में सबको बताते थे एक दिन में बचा यंग फेलो ओनली मालूम है कि 40 लाख का महीना कितना हाँ होता है बहुत अच्छा जब मेरा फ्रेंड तेरे कॉलेज से डिग्री किया है माय ओन क्लोज फ्रेंड उसको ज्यादा ही नहीं लगा ओनली 12 लाख का पैकेज लगा साल का ओनली वो बेचारा 3 महीने में पागल हो गया तो उसने बोल दिया कि जॉब नहीं चाहिए क्या सर आप कर रहे हैं कंपनी का ऐसे ही तुझे 40 लाख उठा के हाथ में देता है तो ये बात तो मैंने सोचा भी नहीं अभी सोचेगा टू बी वेरी फ्रैंक दिस ओन जियो कंपनी अभी देखा है डीएकेसी पे कैसा काम चलता है ये अपना रबाले एरिया में जो पूरा उन्हीं का है ना ऊपर के ना से हाईवे में सॉरी टू से दे आर मेड टू वर्क लाइक एनिमल्स एंड सॉरी व्हेन आई गो देयर उधर एक अच्छा चाय का दुकान भी है मैं और मेरे फ्रेंड जाते तो उधर जाते हैं फॉरगेट अबाउट द बॉयज द गर्ल्स आर स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन स्टैंडिंग एंड यू शुड लिसन टू द लैंग्वेज एयर पोल्यूशन तो चालू है साथ ही साथ जो मुंह से भगवत गीता का श्लोक निकलता है ना फिर मेरे दोस्त को इतना क्या कर तुझे थोड़ी लगे चुप बैठ ये बहुत अच्छा लगा हाँ जा साइड में जा तुझे देगी अच्छी से as you are trying to say mental labor is also equally strenuous so why do you go so distance आप लोग भी तो है जैसे मैं 4-6 घंटे चलाने के बाद बोलता हूँ सर हाँ देर से ज्यादा हम लोग टायर्ड मतलब क्यों आपको तो सिर्फ बोलना पड़ता है ये लड़के नहीं बोला इधर हमको सुनना पड़ता मतलब सुनने में किधर दर्द होता है इधर फिर पूरा सर में दर्द होता है मतलब बोलने से थ्रोट में ओनली थ्रोट ना व्हाट आर यू क्राइंग फॉर I might say yes also अभी बच्चे इतना प्यार से बोलते yes you are correct so but generally it is understandable white collar jobs are generally mental or physical labor white collar jobs mental labor and what is opposite of white collar मुझे मालूम था तेरे से यही आंसर है purple collar purple so where I am working as a construction worker or a factory worker I have to exert more of my physical energy and तुरंत लड़के ने बोला kinetic energy kinetic energy डिफाइन हुआ फिजिक्स में चालू हो गया नहीं लिया anybody science nobody you also अच्छा उसके जगह पर ही इकोनॉमिक्स था तो मुझे अभी भी याद है वो मैडम हमको ऑसिलेशन सिखा पेंडुलम कंप्लीट टू एंड फ्रो एक लड़का बोलता है रुको मैडम मैं जरा पेंडुलम को ट्राई करता द वे ही स्विंग्ड इट डिडंट कम एट ऑल वो आयन बॉल ही रहता ना छोटा सा हाँ पेंडुलम तूने वो भी नहीं देखा है तो देश में आगे बढ़ेगा कहते हो तो इसको ही आगे बढ़ाएगा so we always believe both physical and mental labor strenuous second one skilled semi and unskilled abhi skilled and unskilled are exactly opposite so give me example of unskilled farmers construction workers and who are skilled doctors engineers huh thank you he is calling me skilled sachi thank you jaldi se bolne lagte point हाँ PA अच्छा CA ये क्या बोलती है नहीं करेक्ट अरे नहीं एंड देन हु आर सेमी स्किल्ड डॉक्टर के अंदर जाने से पहले एक बंदा या बंदी मिलती है वो डॉक्टर से भी अच्छा दवाई देती है मंदिर में खड़ूस बोला हाँ मैडम वो 100 रुपए लेते हैं लोग 50 रुपए रख लो और दवाई दे इन माई ओन होम टाउन आई हैव सीन मेडिकल स्टोर में ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया वो होता है एंड दैट मेडिकल वाला गिव्स इंजेक्शन आल्सो मतलब इधर तुझे क्या लाइसेंस दिया है मैं डॉक्टर है तो फिर मेडिकल स्टोर पे बोला नहीं वो तो पार्ट टाइम है किधर है तेरा बोल अभी बनाने के लिए दिया है फिर 2-3 मंथ all people are getting injection from that only in fact मैंने सुना है और उससे थोड़ा एक 5 मिनट दूर में डॉक्टर का क्लिनिक भी है मुझे क्या सर आपका क्या चल रहा है कुछ नहीं सर वो मेडिकल वाला ही धंधा करता है मुझे तो कोई पेशेंट नहीं है so he is a semi skilled fellow he knows ऐसा नहीं कि he is not a but is he a doctor semi skilled half knowledge is always कुछ संस्कृत वर्ड अर्णव गोस्वामी बोलता है अंध बुद्धि या कुछ वो बोलता रहेगा मंद बुद्धि आई डोंट नो आधा नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर या तो आपको पूरा नॉलेज रहना चाहिए या पूरा नहीं रहना चाहिए
If you are fully unskilled fellow, you will say sorry sir, मुझे आता नहीं है, मैं नहीं टच करूँगा. और जो fully skilled है वो फटक से आपका काम करके देते. और हम और आप unskilled, semi skilled. लैपटॉप खराब हो गया, ओपन कर, मैं ठीक कर. My friend PhD in physics, he is that side. He will open the laptop very quickly. एक दिन मदरबोर्ड में कुछ ने कर दिया, गया खत्म. अभी लाया फटका, अरे ऐसा कुछ नहीं आगे, मुझे आता है, मतलब हाँ अभी अभी सीख रहा है. And he does it also, ऐसा नहीं कि नहीं करता, कर देता. But can I call him as a fully skilled fellow? He's a semi skilled. I can't call him unskilled. कभी कभी ठीक करके भी दे दिया मेरा लैपटॉप. I better to avoid. I don't know. Teaching या writing बोल मैं करूँगा. That is my job. So one is skilled, another is unskilled. In between we have semi-skilled. Is it okay? The next we have professional and administrative. अभी administrative को simple way में इतना ही बोलूँगा. Who is only for office assistant work, and who are professional labor. अभी जैसे CA, she told, he is a professional labor. उसके नीचे भी 2-3 लोग काम करता रहेगा. He also given the exam of CA, but वो इंटर या पेंटर में रहता है ना. What does it mean? He is a person who knows work about CA, but he is not a qualified CA. Correct? So he is a administrative or professional. Administrative. Every lawyer has many assistants. They are also lawyer. Can we call them as lawyer? वो अकेला केस लड़ सकता है? क्यों नहीं? वो अभी सीख रहा है. So he is administrative. Another is a professional. Next is productive and unproductive. Only on administrative works. ना वो भी कर सकते. मैं तो थोड़ा सा practical example करूँगा और कुछ. Next is productive and unproductive. What does productive means? Whatever labor you put in, you will get the rewards or the products for it. हाँ? क्या plate? Plate. उसमें क्या productive है? वो unproductive है. कोई productive नहीं. तुम लोग सिर्फ waste ही करते time. Whereas productive, whatever labor you are doing it, you are going to get the reward for the same. And employed and unemployed तो मालूम है. Next is we have wage labor and non-wage labor. How would I differentiate between wage and non-wage? You are unpaid. Unpaid है तो काम क्यों करेगा? Non-wage मतलब you will be getting salary. Not fixed. Wage मतलब आज 250 मिल गया, कल पता नहीं दूसरा सेट में कितना दे रहा. And non-wage are salaried. अभी हम लोग salaried है. What is salaried? Monthly हमको income अनुभव सर account में डालते हैं. So I am a wage labor or I am a salaried labor? So what is that category? Non-wage labor. Correct? Look at the next one. That's it. Now I want everyone to read this. Only write the example. Or if you could write one line, that's also sufficient. It depends on where you are working. Na? देखो, nothing is fixed in India unless and until you are the government employee. Government gives you all fixed because वो पूरा appointment अभी बड़ा companies में भी रहता है. But आजकल कोरोना में कितना बड़ा कंपनी ने डायरेक्टली मेल डाल दिया मत आओ. But government cannot do it. But even in government, some of my friends are in government schools. उनका भी सैलरी कट किया government. 60% कट किया. But जबकि स्टूडेंट से सब फीस लिया, बस भी फीस नहीं छोड़ा. मैंने कुछ प्राइवेट स्कूल से सुना है. They haven't left the school bus fees also. अरे पेरेंट्स को झगड़ा करना चाहिए. हाउ कम मेरा बच्चा तो घर पे है, तो क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर चाहिए तो बस, नहीं चाहिए मत. Some private schools have harassed the parents, but government ने फिर लॉ बनाया. अगर किसी ने पुलिस में कंप्लेन किया that school is harassing for fees, school can be taken strict action. फिर उन्होंने बोला नहीं मैं कर तो भरो, फिर देखो अगले साल फिर हम आपका बच्चा को स्वीटली बोल रही है, हम अपना आपका बच्चा को देख लेंगे. फिर बोले नहीं हम भर रहे फीस भर. Come on, go through. It's almost 1:30 now. Sharp I will get because we have this Bhumika, not in CS. So write that one example and then you can leave. Break है ना 1:30 को and 1:45 we start or 1:35, 1:45. इसने बोला ब्रेक आके प्रोडक्टिव है.
अभी ब्रेक से जाकर आने के बाद तुरंत पूछेगा क्या किया. Yeah, as an assignment, you guys, when we meet in the next Sunday's class, na, you write the characteristics also, only the heading. How many headings are there? Whatever. ठीक है. तो आप 11 को कम से कम 7 या 8 बनाने का ट्राई करो. Don't write all 11. Okay. So thank you. I'll give you perfect time for the break, so that my friend doesn't complain me. है ना? ऐसे क्या करते हैं? क्या करते हैं?
Any introduce anything or you want to? Okay. Okay. What is it? Two feelings. कुछ कुछ खा लो ना अपने क्या लाया है बोलो करना है लेकिन फ्री what is it अरे वो थोड़ी वेट करता है you tell me I'll get it down 2 eggs it's very sad You guys have signed in both the attendance sheet, na? You also? Yeah. CS, tell me what I was doing. We are ahead in economics or we are ahead in CS or both? CA, sorry. Both behind. Your school have not started and how come you are telling the lies? Both behind. Well, their method of teaching and our method of teaching. है ना? कुछ भी बोलते हैं. Tell me, is the textbook same for all ना? एक काम करो, एक दे दो और एक join हो. क्या बोलना? So tell me what I was doing. CMA. Oh, marketing means start कर दो आज. Types of markets we have done, definition of marketing. This stages of marketing I have asked you to copy down. Correct? Sir. ये picture ना. With the years, you didn't. Do it now. That is what role of marketing we have done. Meaning of nature of product we have to do. Am I correct? पहले देखना इंडेक्स पेज में देख क्या क्या इसमें है. Role of marketing, stages of marketing, meaning and nature of product, meaning and nature of services. ये अच्छा करके comparison of some stages, role of marketing, meaning and nature of product, meaning and nature of services, difference between कुछ भी omitted नहीं है, पूरा ही है. So let us go to that diagram first. Hey, I think I have roughly explained production oriented, sales oriented. Explain क्या था मैंने? Production. I have explained. Sales oriented I didn't explain. Okay. This page number is 4 and 5. So there are 4 stages of marketing. First one is production oriented stage. There are 5 stages. Okay. Second, phase. Stage oriented. Sales. Next. Yeah. Society. So क्या बोलते? Society oriented states.
Now tell me, first one we have done production oriented. And second one is sales oriented. They've given the time period. Look at that: 1869 to 1930, 1950 to 1960. Societal is 1980. Sales is 30 to 50. Market oriented is 60 to 980. So we have completed the first stage. Am I correct? The second stage, as the word is saying, sales oriented. How do I clearly define the stage? It is that stage in which the company is normally fixing its targets through the sales. If I compare it with the other one, it is product oriented. So when we complete the sales stage, here the company is normally fixing the sales target first. Why sales target first? Based on that only they will be going for production. If I produce more and my sales is less, what will happen? I have to store it in my warehouse, which will be an additional cost to me. If my product is less but sales targets are more, I will be going for again losses. I can meet the sales. So normally sales stage is that stage in which the company tries to fix what kind of sales and what will be the quantity and what type and what quality. Is it okay? एक काम करेंगे अभी एक एक स्टेज एक एक को देते हैं रीड करेंगे वैसा रीड एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है लेट हिम रीड द प्रोडक्शन स्टेज फर्स्ट स्टेज others just listen. Production. This stage in motor was to tell what can be produced. There was a good shortage of goods that they had to create demand. Product was to focus on attention and communication with the buyer. Communication with the buyer was not needed. Product was manufactured on the assumption that customers will search and buy well-built at reasonable price. It is an assumption that customer will buy it. And there are certain assumptions what kind of products he is going to produce, the customer is going to buy that one. Next. This was based on sales law. Supply creates its own demand. It was believed that customers are capable of selecting products from among the brands firms that follow the production efforts to make their products expensive and widely available to mass production and mass distribution. Now, how do you explain the word mass production and mass distribution? Because when the machines are going to be introduced and when the electricity is going to supply, the machine is not going to stop. At least it will produce, one machine will produce 1,000 good. Take example. There are 100 machines. So 10 lakhs of products are produced in a day. But then 10 lakhs has to be sales also. Sales भी रहना चाहिए ना. Sales आके only 10% भी नहीं है. Are you understanding what I'm saying? So always this big company you feel so easy to operate. It is other way around, so difficult to understand what it is. So this subject, commercial application, will tell you one thing, that to become a successful businessman is no book is there, no formula is there. It is you who have to manage the business. Although you know what is this CA and what is all these points are going to come, but then you have to understand on your own. Okay, Chali, next you read. Second stage, na? Great operation result in situation that the thinking and strategy of the business. And changes in the buying habit and behavior of consumers, technological advance in transportation and communication and the growth of the corporate from the organization also changed the thinking. The focus shifted from production to selling. How to sell become a problem that new methods working get. Now the production, now motto is not production. Production is ongoing. Now the slowly company will shift to the selling motto.
I've installed the machines. Raw material is also ready, and the machines have started working. If a machine started working means my next target will be what? Production start होने के बाद मैं sales फंडा use कर सकता है? क्यों नहीं? Because by the time I finish my sales strategy, the machines might have produced lakhs and lakhs of goods. Where I will keep warehouse, extra kharcha. Forget about the extra kharcha of the warehouse. Whatever I purchased raw material, do I need to pay him back? Raw material वाला को मुझे pay करना है ना? वो पैसा मैं कहाँ से लाएगा? Sir, ये तो आप मुझे बहुत फंसा दिया है. उसके पहले आपका टारगेट सेल्स टारगेट रेडी रहना चाहिए. I am producing 10 commodities, only 3 customers are sitting in my front. उसमें से भी सैन बोलते हैं नहीं पैसा कोई मुझे ज्यादा जरूरत नहीं, उसमें से भी 2 ही है. ये बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, वो बोलता है मैं अभी नहीं दूंगा. खत्म. What I do? So production's one stage is done. The next target is what? Sales. So look, to run a company, although I'm just teaching theoretically, practically कितना बड़ा difficulty है. No doubt we have only few businessmen which are successful, whom are successful. Like out of the Ambani brothers, who is more successful? Huh? Mukesh Ambani. Anil has gone bankrupt. Anil was more of a flashy fellow only. When he married to a Bollywood actress only, you know that? Kabhi dekhna. In fact, Mukesh Ambani gave him 300 crores to clear all his burden. But then, अभी देखो अनिल का कुछ news है? Mukesh. He is the person who is taking the name of whom? Dhirubhai Ambani. है कि नहीं? So when he returned from America, finishing his MBA degree, Anil Ambani, his own dad gave him a company worker job. So it was very difficult for Anil to digest. मैं MBA अमेरिका से करके अब मेरा किसका है? कौन रहेगा? I don't know. कौन? Pick up if it is. हाँ तो पिकअप करना किसका फोन में आ रहा है? को छोड़ के गई. हाँ जा दे दे. What is he saying? I'm in my teaching mood. Suddenly I want to pick also. You move. हाँ ओके करना गया भी रहेगा. अच्छा ठीक है जा दे. कौन किसका फोन बोल रहा है? अच्छा शी इज इन मराठी क्लास. अच्छा वो इधर बैठी थी वो लड़की अवनी. First of all, I recollect my student's name is a real. So now you understand the word sales. So let us read sales now. Go ahead. Get rid of what we have. Producers begin to realize that consumers will not buy enough unless they are approached with subsequent selling and promotional effort. The focus was on increasing sales rather than on consumer satisfaction. Demand outstripped supply and it was still a seller's market. Thus, the sale-oriented sales was capitalized by the selling in the process of aggressive selling and Underline the word aggressive selling. Practice occurred. Salesmanship was the focus of marketing activities. Underline salesmanship. If I tell you, I might have already told you. What do you mean by sales? What do you mean by sales? What do you mean by selling? I remember, I think which IIT, I don't remember. IIT of Kanpur or something. Giving the information about the product to the consumer. Only the information. बेचना नहीं है. Then that is sales marketing. You are not doing sales. Sales and sales marketing are different, na? You are doing sales marketing. What is sales actually?
giving the product. Come on, technically bolo. Now what he is reading is sales marketing. Selling a given unit of a commodity at a fixed price in the market to a customer. आपसे खरीद के गया, sale complete. Like an opening of a sale. Then you have to give a pitch. You know what is a pitch bolt? I'm pitching my sales. Then I'm explaining the cons and pros. Then फिर उसका complaints रहता है, उसका ifs and buts वो भी attend करता है. Then closing of the sales is very important. Closing का time में वो दुनिया भर का नाटक करेगा. The person who takes the decision is not here. बोले उसको भी बुला लो. जैसे मैंने वो नायर का last time देखा ना, Mr. Nair. He is an amazing fellow. I had attended 1 3-month course program with him. He says closing the sales. जिस कंपनी में भी मैं जाता हूँ, उस कंपनी से 5 या 10 लाख का चेक उठा के आता हूँ. क्योंकि वो पूरा बैकग्राउंड करके जाता है. कौन है पार्टनर, कौन है डिसीजन मेकर, कौन है चेक में साइन करता है, उसका बीवी का डिसीजन है क्या, वो खुद डिसीजन लेता है, कितना बार इसने ऐसा सेल्समैन को बुलाया. He does all the homework. When I am calling my person fixing the appointment, can I come tomorrow? ऐसा नहीं बोलने. Tomorrow I am coming at 9 o'clock. So feel free, keep yourself ready. If he is saying, but okay, no problem. After 2 days I am coming. Don't give him an opportunity. वो salesmanship में बताता है. Are you free tomorrow? अगर वो no बोलेगा तो क्या करेगा? उधर ही आपका सेल अटक गया. Can I come and give you a demo? No. I don't understand what I'm trying to say. So sales is such a huge field, na? You do even 10 years, 13 years, then also you are a raw fellow only. And there are people who doesn't know what is sales, but they will sell the commodity. ये अपना स्टेशन में देखा कैसा वो लोग बेचता है. अभी उसने कौन सा सेल्स मार्केटिंग किया है? But he knows the customer. ये जो ट्रेन में आता है, how does he sell? है ना? He keep shouting. देखने के लिए पैसा नहीं है. In fact हम नहीं भी देखते तो अपना बाजू में रख के चले जाते. He's in fact asking you to see it. Once you like it, then he will come and hit you. So when the production stage is almost there, the next burden to an entrepreneur or a marketing is sales. अभी समझ में आ रहा? Let's proceed. To be very frank with you, whatever you say, read आधा ही मेरा कान में. So what is aggressive selling and useless practice? Aggressive is what I try to teach you. By hook or crook, the customer has to buy my product. उसका मतलब जबरदस्ती नहीं लेना ही पड़ेगा, ऐसा हाथ पकड़ के. Decrease of price. Decrease. अभी देखो मुझे मालूम है कि cost of the pen is 10 rupees, but I'm selling at 25 rupees. अभी मेरा ब्रेक है 15 रुपए में, ठीक है. तो आई एम नॉट गोइंग टू रिड्यूस फ्रॉम 25 टू डायरेक्टली 15. फिर वो 15 से 10 में भी आएगा. So when I'm saying aggressive selling means you identify why he's not buying it. पहला, if he buys it, what best pen you are selling to the one? The closest competitor is 15. Why are you charging in 25? Every answer you have to keep it ready. So aggression matlab by hook or crook, he must buy it. If he is not buying it, whose responsibility? Whose responsibility? Is the customer bad? Customer is good. You are bad. It is you. मुझे याद है मैं पहला जो मेरा जॉब था, I was in Bandra area. हिंदुस्तान यूनिलीवर का चेयरमैन था हमारे. And वो बोल रहा था क्या हिंदुस्तान in Bandra. That was when I was second year or third year of college, maybe 12-13 साल पहले की बात. वो मुझे बोल रहा था, लगेश इतना बड़ा कंपनी आज है हमारा, बट हम लोग आज भी वो पुराने दिन सोचते हैं. हम लोग एक 10 by 10 में एक छोटा सा कंपनी, उधर ही मार्केटिंग करते थे, उधर ही सब कुछ होता था. एक ही पीसी था हमारे पास. लैपटॉप तो हम लोग ने जिंदगी में नहीं. आप लोग कभी आते मैं लैपटॉप देता हूँ, ट्रेनिंग करवाता हूँ, बट हमको लैपटॉप तो दूर और मोनोक्रोम का कंप्यूटर था, उसी से हम लोग ने काम किया.
हम जाते एसी रूम चाहिए सर, ब्लेजर टाई, बट इसी दिस इज व्हाट वी हैव डन मार्केटिंग। कस्टमर से हम लोग मिलते थे, डेटा नोटबुक में लिखते थे, कल आएगा तो कितना बजे चाहिए, क्यों नहीं ले रहा है, सारा डिटेल्स। So when you do the homework and you convince the customer, not giving him any loopholes to escape, that is aggressive. And what is the next one? Unscrupulous. Unscrupulous. Wait, I'll also keep the book in mind instead of asking. Which line is reading? Is he in first stage or second stage? The focus shifted from वो भी हो गया ना? Thus the sales oriented stage was characterized by hard selling. In the process of aggressive selling, unscrupulous practices occurred. Unfairly. मतलब अनवांटेड प्रैक्टिस वो एक्सेप्ट करेगा, उसीलिए तो वो अग्रेसिव कर रहा है। बट अगर आप जितना हो सके कम झूठ बोलेगा कस्टमर को, जितना हो के ईमानदारी से उसको बोलेगा ना, आजकल का कस्टमर समझेगा। बट सेल्समैन अनवांटेड तरीका यूज करता है, दैट इज व्हाई ही इज स्पॉइलिंग हिज नेम एज वेल एज द एंटायर। अभी हमारे घर में कोई सेल्समैन आएगा तो हम उसको अलाउ करते हैं, क्यों नहीं करते? But in America, to be very frank, they don't like IT jobs. They don't like sitting in a computer for a whole day. Oh my God, इसीलिए Silicon Valley में हाँ, their number one job is insurance, and the maximum earning is insurance agent. समझा insurance agent कौन है इंडिया में? When they go to a house, they do all kinds of homework. Mr. Robinson and Mrs. Robinson. How many children they have, how many big flat they have, where all the investment Robins have done. If I pitch him this insurance, will he buy it? He has built a beautiful $300 million house, but he has not taken a fire insurance. But America में compulsory लेना ही पड़ता। कार का एक छोटा सा हमारा ATM कार्ड है ना, उतना ही रहता है। You have to insert in one part of the car. It will tell you कौन सा spare parts कब change किया और कौन सा quality का सब बताते हैं। जब हमारे मैकेनिक के पास छोड़ेगा तो what he does. मैं उधर एक पंजाबी मेरा दोस्त था, उसको मैं बोलता था क्या अजी ये उधर जैसा नहीं है, अगर एक भी स्पेयर पार्ट्स मैंने डाल दिया एंड ही फाइंड्स दैट आई पुट इन अ फॉल्स वन, ही कैन सू मी। अमेरिका में यही काम है, तू मुझे सू कर, मैं तुझे सू करे। बोले ये कौन सा सू है सर? ये SUE सू है, वो वाला सू नहीं। मीन्स व्हाट, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे आर परफेक्ट। आप स्टारबक्स में जाके कॉफी पिया करो, उस कॉफी में अगर एंट मिल गया, यू कैन सी द स्टारबक्स एंड प्रूव हो गया, देन ही और शी विल बी आस्क्ड टू पे मिनिमम $2,500 और कप है $4 का स्टारबक्स, उसका नाम खराब हो रहा है। देयर इज इन इंडिया, निकल के 3 है, मिला था क्या? हाँ ठीक है, अगले टाइम में वो अभी तक इंडिया में वो अवेयरनेस आया नहीं, और मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं, एट लीस्ट वी ओनली। So we always believe this unscrupulous methods are those methods where you want to just put it on your head and you will run away. What will happen? Next fellow who comes, genuine salesman, आप कैसे ट्रीट करते हैं उसको? I don't understand what I'm saying. तो इधर भी आपको रेडी रहने दो। हाँ कल एक आया था, उल्लू बना के चले गए। हाँ सर मार्केट में ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं, बट मैं उनमें से मैं नहीं, तो नाइट ऐसा मान लो। हाँ सर आप क्यों मानने लगे ना, 100 में से अगर 9 पेमेंट में तो आप नहीं मानने। आपको मैं अपना गारंटी भी दे सकता हूँ, अपना कंपनी का कार्ड भी दे सकता हूँ, और बाईबैक पॉलिसी भी देता हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाईबैक पॉलिसी? मतलब वी विल एटलीस्ट लिसन। सर 15 दिन का बाईबैक पॉलिसी है, कुछ भी हो जाए तो आप मुझे फोन करेंगे, मैं लेके चलूंगा। बोलेगा मैं कैसा मानूं? देखिए सर मैंने 2 बिल्डिंग के नीचे दिया है और उन्होंने बाईबैक लिया और मैंने रिप्लेस करके भी दिया, पसंद नहीं आ रहा आपको, अगर यकीन नहीं हो रहा, ये नंबर है कस्टमर का, ये टेलीफोन नंबर है, फोन करके आप ही पूछो। आप अपने मोबाइल से करेंगे या मैं मेरे मोबाइल से करूँ? वो बेचारा सामने से मुंह ही नहीं बोलेगा। हाँ, these all the things I've learned from that these videos only. What does it mean? He is an aggressive salesman. आपका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है। हाँ सर आप जैसे पर्सनालिटी के लिए थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, पर ठीक है सर मेरा क्वालिटी भी है, सस्ते में बहुत सारा प्रोडक्ट है मार्केट में, आप खरीद सकते हैं, ऐसा कोई कुछ है नहीं। बट वो खरीदने के बाद आप उसमें इतना फॉल्ट निकलेगा, फिर आप ये रिपेयर करेंगे, मतलब गिविंग इन टेक्निकल रीजन, फिर आप नया खरीदने जाएंगे, उससे अच्छा एक ही खरीदिए ना। सो ऑल थिंग्स इज रेडी,
Okay, go ahead. Have to explain more and give notes also. That is also. Question important was nice, but only as a means of this point. What are you doing, man? Salesmanship focuses on marketing activity because product could not be sold without underlying effective sales force. Customers' importance was realized, but only as a means of underlying disposing of the goods. कस्टमर ने क्या आपको कस्टमर क्यों चाहिए? सिर्फ आप अपना गुड्स को क्लियर करो, लेके जा, खत्म कर. ऐसा रहेगा तो दोबारा वो कस्टमर तेरे पास आएगा? Don't keep customer as a disposing of. मतलब उसको dispose मत कर. तेरा commodity का एक value create कर. I'm sorry to say, you might have gone to any other classes with your parents to inquire also. Fees might be lower, but you come here UT because UT has created a name, a brand, and our method of teaching, our quality teaching might not be another. That is why the fees are higher. अभी आलन जैसा जो बंदा है, कोविड के टाइम तो उसने बंदी कर दिया. अभी खोला है, now is giving, I don't know, half the price. But UT maintains its price. To be very frank, Anubhav sir has not closed a single batch, a single lecture, both in COVID-1 and COVID-2. We all were working. And that was more difficult working than what we are working. Not only we, the administrative assistants, everyone. Proper lectures होता था online में. अगर आप कोई 9th का स्टूडेंट को जानता है जो ऑनलाइन लेक्चर्स लिया है ना, उनसे पूछो. प्रॉपर पेटीएम हुआ, प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट हुआ, प्रॉपर लेक्चर्स हुआ एवरीडे जैसे आप लोग कहते हैं. अब वो दूसरा बात है कि द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू मिंगल, बट सब कुछ किया हम लोग. बट क्या पर्सनल नहीं. But again now we have started, again we are doing the same. So don't you think that we are not disposing the customer, we are maintaining the customer. समझ में आया? Let's proceed. Selling of philosophy. The selling philosophy is still used in insurance, charity fund, raising, and other unsought product. ये fundraising इंडिया का concept नहीं है, American concept है. हर स्कूल में एक दिन रहता है जहाँ फंड रेजिंग बोलते हैं. सुना रहेगा आपको, स्कूल में भी होता है. बड़े बड़े अमीर लोगों को स्कूल में बुलाते हैं, रिच पीपल. वो उधर का कॉन्सेप्ट है. वो बच्चे को मैं सिखाते भी है फंड रेजिंग होता है क्या. मैं खुद भी काम किया, हमको पैसे नहीं मिलते. Rich people will be coming, then we'll be explaining them. Students will be performing some drama, music, and at the end of the session, party will be there, and every rich people will be giving a check, whatever possible. $1,000, $2,000, $5,000. Like 10 people give a $5,000, okay, 50,000. और क्या चाहिए? So this is what that fundraising, but that is not here. Here they are saying selling philosophy is still used in insurance. Insurance में है ना ज़्यादा. उसके बाद किधर है? Charity fundraising. वही है अमेरिकन कॉन्सेप्ट. What is charity fundraising? हिंदी में हम लोग को चंदा बोलते हैं, उसका पूरा मीनिंग ही चेंज कर देते. सर हम चंदा मांगने हैं, निकलो यहाँ से. चैरिटी फंड रेजिंग है. अच्छा ये कुछ नया है क्या है चैरिटी? नहीं सर वो हम लोग अच्छा फिर क्या करना है? नहीं सर आपसे जो बन पड़ेगा आप दे सकते. वो 10 रुपीज देगा तो भी आपको उतना ही स्माइल देना है जितना वो 1000 रुपीज. 10 रुपीज बस. अच्छा एक काम करो, ये मेरे तरफ से तुम्हें रख लो. Although he is ready to give you 10 rupees, वो भी आपने मना कर दिया, but he will tell 100 people. कल आया था ना घर पे, वो indirectly you will bring your income only zero. Are you understanding? ठीक है सर, आप अपने बड़ा दिल से 10 रुपीज दिए, भले ये छोटा अमाउंट है, बट आपके नाम से हम रख लें. आपका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना बाजू वाला करने आजाद. क्या सर चलने का 1500 नहीं सर 10 रुपीज नहीं लेके जा. उसने मेरे से कम है वो 1000 रुपये दिए. ठीक है सर, आप इतना फोर्स करते तो लेता हूँ. अगर उधर भी जाके मैंने यही फंडा अगर किया, एक दिन सोसाइटी वाले मुझे ऐसा धोएंगे है ना, उधर जाके नहीं बोलना उसने 1500 दिए. Are you understanding? So charity fundraising also we take this marketing strategy. Look at the last one. Other unsought product and ideas. What is unsought? जो अभी तक हम लोग ने सुना भी नहीं रहेगा.
वैसा ideas भी imply करते हैं. Okay. Now let us go to third one. She will read. And now you tell me, shall I give you notes because इधर किसी में important लिख के रखा है. हाँ मैं notes देता हूँ. तूने लिखा है. तो जाके भी पढ़ा क्या? क्या? Look at this mind. क्या पढ़ा ये? हाँ. Four stages of marketing are the five stages. ठीक है ना मैं पूरा डिटेल नोट दे देता हूँ. चलेगा आप लोग कर लेंगे. चलो. Next. Product oriented stage. From 90 to 90. In this stage, marketers believe that customers will buy different quality products. Therefore, the focus shifts from one stage and one stage. Underline the word. Other efforts, satisfaction of the consumers. I'm sorry to say, I should not say. Now, what is happening in Nerul branch, I come to know now only. Why they are asking me, why they are not liking the other teacher, it's left to him or whoever it is. But I am trying to improve my teaching method every day. They are happy with my method of teaching, that's why they are asking. Yeah, okay. But आज तो लेक्चर नहीं था ना, तो क्या हो गया? सब गए थे और अथर्व के साथ कौन? ये सब कौन नहीं जानते? धोनी नहीं गए. What is your basic demand? That geography I should teach. Yes. History चलेगा. So that I was just He is always standing by. खाने के लिए पहले. So why I am putting my example here? They are demanding that the other teacher they don't want it. One subject they want me to. I mean, they don't know how I teach in geography, but some 9th standard students know that. I've already taught them. But then here, instead of discriminating the other teacher, I'll try to improve my quality. Maybe she is good, but the technique that she adopts may not be, you are not liking it. She might be best. But the way she is putting up the answer, you are not following it. So here I cannot say the concerned person is not good. It is my customer who do not like. आप ऐसा कभी बोला है, सर वो प्रोडक्ट तो अच्छा है, but मुझे उसको यूज करना नहीं आता. होता है बहुत बार. Can I say the product गंदा प्रोडक्ट? गंदा क्यों? Because तुझे यूज करना नहीं आता. अगर properly यूज करेगा तो product will give you best service. I remember when washing machine was introduced in India. Many of the dhobis were in serious tension. You know dhobis? अभी किधर है dhobis? सब खत्म. अभी laundries है. बेचारा laundry में भी किधर पहले जैसा वो भी business नहीं रहा. So every inferior technology, every superior technology will cause some trouble, but you have to be prepared for it. Go. This has been called marketing biopics, which means short-sighted. Short 5 letters. Sighted. Short-sightedness. What is short-sightedness means? Udhar likho short run benefits. Always think for the long run. That's what the marketing will help you. Next, you only read. Marketing oriented stage, 1960 to 98. Emergence of heat competition and consumer awareness, both producers to easy cover of huge market. They realized that business policies and programs to be built around the growth of management should take focus on value satisfaction to the customers. If the management thinks only we are selling the products, बाकी तो हमको कोई लेना देना नहीं है. Do you think the people will continue to buy that product? They wanted to give you values. कर लो. ये अच्छा तू कुछ निकाल रही है भाई सब suddenly ऐसा left right bend करते हैं मुझे भी टेंशन आ. कि you do workouts also early morning. तेरा physics और sustenance. कितना बजे होते हैं? तो भी क्या करते जरा बता. इसके लिए इतना I have started my gym. Yesterday I couldn't go. I was very tired. Today I went in morning. The body starts paining because putting weight is not so easy. But okay. What I was saying.
Value satisfaction. I mean, if I sell this product, you will buy it because you need it. But if I add the value more, you will continue to be my loyal customer. What is the value? I will add maybe some strings I will attach and give you. Maybe you buy this, I might give you one liquid cleaner. Maybe you buy this, I might give you extra 2 pieces of this cloth. But अगर ये नहीं देगा तभी आप खरीदेगा ही. But I'm adding value to the existing product. So always the producers should think I'm not only giving you the product, but I'm also giving you value satisfaction. Coffee shop normal में भी आप पी सकते हैं, Starbucks में भी पी सकते हैं. Why only Starbucks is very 300 rupees or 400? बाकी तो 20-30 रुपए में कॉफी मिलता है ना. क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, quality, personal touch, what else? Brand है उसका, and the ambience, and the way they prepare the coffee and give it to you, and what all the symbols they draw. Is it? What else? Leaves are, and sir pastries मिल जाता है आपको. Variety, mocha, locha, मैं बोलते ये सब चीजें आता. So लाठे भी बोले वो भी है. अरे बाप, अभी तक तो मोचा और लोचा दिया. सर उसको लाते बोलता ना, मुझे भी मालूम. अभी I go to a normal coffee shop, give me one coffee espresso, double espresso. बोले वो क्या होता है? कुछ नहीं, वो सब इसको मिलता नहीं है ना. But there you will get it. Actually आप अंदर जाने के बाद वो coffee beans का aroma से ऐसा लगता है कि साला उठना नहीं, बैठ जाते नहीं. And every, I think इधर देते कि नहीं, I remember every coffee box of Starbucks will have a free Wi-Fi, and not like here, unlimited. मैं 90% काम तो उधर ही बैठ के करता था. एक कॉफी ले लो और बैठ जाओ. हाँ, अच्छा रिफिलिंग भी करके देता है, उसका एक्स्ट्रा पैसा फ्री. ये कुछ है बता, मैं देखा हर जगह नहीं रिफिल फ्री में चलने लगता. हाँ, मीटर स्टॉक में रहेगा, सब में अगर देगा तो उसका जो वैसे भी हमारे इंडियंस को फ्री में पीने का आदत है, तो आज बोल के तो मैं कल से मैं उधर ही भी सुन. So simple to tell you, he is giving you the customer satisfaction product, for which I am ready to shell out 300 to 500 rupees. But हमारा एरिया का जो कॉफी शॉप है 25 रुपीज में देता है, अगर 5 रुपीज बढ़ाएगा ना मैं नहीं लेगा. क्यों बढ़ाया 5 रुपीज? Can I ask the same to a CCD fellow? Can I ask the same fellow to Starbucks? So the services has improved, sir. You'll be getting extra one refill. Because आपको 25 rupees extra. Very good. I am ready. So that is what value satisfaction to the customer. Underline business planning and decision making. Now, how do I explain these two words, business planning and decision making? Business planning is short run or long run? Long run? Yes. Long run? Yes. And what is strategy making? Strategy making है ना? फिर ये क्या? Strategy is not decision making, man. Two different things are. अच्छा उधर दिया है. अच्छा ठीक. So when I use the word strategy to reach the railway station, I have many strategy. ऐसा भी जाके left मार के जा सकता है, straight भी भाग सकता है, फिर वो बीकानेर वाले से भी जा सकता है. To achieve my target, I have 3 strategy. Correct. But then मेरा business planning क्या है? सर अभी मेरा एक नेहरू स्टेशन में शॉप चालू है सर, और 2 महीने के अंदर मेरा खारगर में और सीव्स में भी डालने का प्लानिंग है. ये तीनों सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हर एक एमआरटी में मेरा एक कॉफी शॉप रहेगा, मतलब रेलवे स्टेशन में रहेगा. सो दैट इज माय प्लानिंग, डिस्टेंट एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग. Because today the government of India gives you minimum of 10 lakhs of rupees with a proper business proposal and a proper business planning. And if the government is convinced with your file,
you will get straight away 10 lakhs, out of which you are eligible to pay only 6 lakhs. 4 lakhs is waived off, mainly for the ladies. Gents के लिए नहीं. Government दे तो रहा है. What is that yojana? I forgot. But then, if your business proposal and plannings are not good, government will not give you money. Is government trying to criticize you? Government को भी तो पैसा return चाहिए ना. 100 का 100 लोग लेके गया 10-10 लाख को किधर से देगा दूसरा का बाकी 100 लोग. So your business planning has to be successfully implemented and with a effective with strategy. बोर्ड में लिखा है ना, हाँ? Marketing strategy. Carry on. Customer satisfaction is the principal reason for corporate existence. The modern market. Hey, we finished by 2:45, no? We are notes there. The modern market of marketing is the zone of Underline direct contributor of profit. Marketing का आजकल बोलते हैं जितना अच्छा marketing हो रहा है उतना direct profit आपको मिलेगा. Correct? Carry on. as well as sales volume. In order to provide Underline the word volume. उधर लिखा output. कितना आप लोगों ने बेचा? That is very important. Sales volume. in order to provide a more highly competitive, a company must consider that will consumer is considered as So underline this. ये भी वो भी बोलता है. नायर भी वही बोलता है. Consumer is considered to be king. Is he correct or is he wrong? How do you say you are king? वो तो normal word हो गया. Satisfaction. जैसे ये अभी मुझे थोड़ी देर पहले बोला. सर हम बाहर जाके ना wrong address करें. That's why he is king. अगर मेरा प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नहीं बोला तो भी चलेगा बट खराब मत बोलो. You are not buying my product, it's okay, but don't create a bad name for the product. जैसे सैन ने मेरे से 15 क्वेश्चन पूछा, 15 क्वेश्चन का भी मैंने आंसर बहुत ब्यूटीफुली दिया. अल्टीमेटली बोले सॉरी सर आई विल बाय इट लेट. बोला थैंक यू. बोले क्यों उस बात का थैंक यू बोला? यू एनरिच्ड माय नॉलेज. बोले यार ये कितना अच्छा बंदा है, इतना मैंने इसका जान का है और प्रोडक्ट भी नहीं लिया. At least she will say to the 10 other people, yesterday I went there, I didn't buy the product, but whatever question I asked, he answered me beautifully. अच्छा ऐसा ही क्या? उसका बात सुन के और 2 जन आए. I don't understand. But whatever she is asking, क्या है? खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे? जाओ ना. ये क्या पूछ रहे तुम? मेरे पास टाइम नहीं है. She didn't buy my product. That's okay. But then, what will happen? This is the trouble. उधर मत जाना, खड़ू से हो. नहीं एक क्वेश्चन क्या पूछ ले, ऐसा नाच रहा था, समझते क्या आपने? ऐसे क्या? वो जाके और 4 जन को बोलेंगे. So indirectly she has done a what? Marketing which I do not want. देखो आप बहुत सारा बड़ा कंपनी में जाके आप पूछेंगे ना ये मैं यूज कर, हाँ लेके जाऊँ क्या? मैं कल बिजनेस या मैं दे दूंगा, नहीं चाहिए हमको, सैंपल के लिए रखा है, आप ही के लिए रखा है. सैंपल वो देगा 50 ग्राम का, बट आप जब खरीदने रिटर्न आएगा सिर्फ आधा किलो का ही पैकेट. 50 ग्राम का. आई रिमेम्बर इट वाज $7 or $9 and half a kg was around $34 or $39 before GST. It was saffron. What is that? It's very costly. तो छोटे-छोटे सैंपल दे रहा था. Sir, free only for you. I used it. It was fantastic. When I purchased it, sir, only 50 ग्राम का डब्बा है. ये आपको 150 ग्राम का डब्बा लेना पड़ेगा. And 150 ग्राम is very high. Saffron, you know that. हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? केसर. But लिया मैंने. Why? Because he was very nice to me. He made me happy. So he cleared his sales. Okay, let's write. It's almost time. Trying to finish it. I want to go into 4 P's of marketing. You need the full notes of this, na? Right up. Production oriented stage. I have given. Good. Did I give detail? Next one, you write down sales oriented stage. 1930 to 1950. In this stage,
the world experienced the Great Depression of 1929-30. You remember, I think आप लोग को ICSE हिस्ट्री में होगा Great Depression. अभी नहीं, बाद में आएगा. Great Depression of 1929-30, which brought about drastic changes in buying and behavior habits of consumer, which brought about drastic changes in buying and behavior habits of the consumer. So underline that, Great Depression. Behavior habits of the consumer. Next point. So the focus shifted from to where? Production to selling. So the focus shifted from production to selling. Next. So the demand was more than the supply. I think a perfect seller's market. A perfect seller's market. Understand what is seller's market? The sales का बहुत जरूरी है. Hence, this stage is characterized as sales-oriented stage. Sales-oriented stage with hardcore selling. Hardcore, core, C-O-R-E. Hardcore selling. Next. Yeah, understand and write down. If you are not understanding, please ask me right now. Hardcore selling. So, next point. The process of aggressive selling unscrupulous, aggressive selling with unscrupulous. It is there in the textbook. Practice was followed. And today we'll be perfectly phonetic with the stage only. See the paragraph? The selling philosophy gave more emphasis or gave more importance to the selling philosophy gave more importance to customers. What did I say? Customers need and demand. Customers need and demand. Next. Product oriented stage. Sorry, faster. Just check as a main. Under this stage, the common belief that
Customers will buy the product if its quality was good. Customer will buy the product only if its quality was good. Customers will buy the product only if its quality was good. Underline customer, underline quality was good. Next. So the marketing firms reduce their importance and there was a total shift from promotion to product improvement. Are you understanding? Promotion of the marketing. Promotion to product improvement. Underline product improvement. So overemphasis on product quality became overemphasis on the product quality became the need of the day. The need of the day. This kind of marketing myopia simply meant marketing myopia. You understand what is myopia? Oh my God, science. There are two kinds of blindness, not blindness, short-sightedness and long-sightedness. Myopia means short-sightedness. Simply refers short-sightedness. Marketing myopia. Look. अभी तेरा कितना फ्यूचर लुक कैसा है तेरा? शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है? वैसा कंपनी का वही लोग पूछते हैं. ठीक है. नेक्स्ट marketing oriented stage will take hardly that's around time as inclusion. Emergence of keen competition, keen later interested marketing competition, keen competition and consumer awareness. Force the producer to rethink and redesign. To rethink and redesign is marketing policy. To rethink and redesign is marketing policy. Samjha, what is this? नहीं समझा? Oh my God. Read it for me. You said you didn't understand that, na? Read that line, I'll tell you the meaning. Now you and me are keen marketing people. Keen, very aware people. The competition is so high today, even one slight mistake, suddenly the other producer takes the,
15 years पहले ऐसा था क्या? नहीं था. Did I give the example of toothpaste? Yes. Colgate. अभी Colgate भी थे, but there are so many close competitors. अभी ऐसे when the heat starts, normally मुझे याद है मेरा स्कूल डेज में रसना, उसका पैकेट आता था, रेडीमेड सैशे भी आता था, बड़ा पैकेट भी आता था. अभी किधर है रसना? गायब है. मिलता है बट कौन मांगता है ना. एंड वेयर एल्स? द कोल्ड ड्रिंक, द कैन फूड. रेड बुल मिलता है अभी इधर? रेड बुल, what all the things have taken. So today it is awareness. It is stiff competition is so high that the marketing people have to rethink their policies. Even one small mistake, entire product. जैसे मुझे याद है जब नीम करके कोल्ड ड्रिंक आया था, नीम है ना, लेमनेड का वो लोग ने नीम लेकर आया. It was initially every youth people like you were drinking it. Suddenly WhatsApp circulate कर दिया किसी ने. और WhatsApp में और कुछ नहीं था, इतना ही था कि इंडिया इज सच अ ग्रेट कंट्री. हमारा विम डिटर्जेंट में ओरिजिनल लाइन रहता है लेमन. विम डिटर्जेंट मालूम है ना, वो बर्तन में. एंड जो लेमन ड्रिंक है उसमें आके आर्टिफिशियल कलर डाल दिया. बस विद इन 1 week द कंपनी क्रश्ड. अभी किधर नीम मिलता है बट वेरी फ्यू पीपल बाय इट. ये माउंटेन ड्यू है ना, माउंटेन ड्यू, उसका आज भी क्या टैग लाइन है? डर के आगे जीत है. ये कौन सा डर है और ये कौन सा जीत देने वाला है कि नहीं? So look how the competition is picked up, how aware you are, how keen you are. So it forces the which people, the producer, to rethink the which policy, their marketing policy. समझ में आया? Shall we? हाँ, तो इतना डिटेल में जाएगा तो हो गया. कर लें, नहीं कर लें, नहीं होगा, नहीं होगा. Let us write that point and complete it. What did I say? So the business policies and programs. So the business policies and programs were mainly built around the goal of customer satisfaction. Was mainly built around the goal of customer satisfaction. That's it. Underline the word customer satisfaction. We actually a बहुत बड़ा point है. Shall we finish it on the next lecture or you want me to continue? Next. तभी तो बोला करना ही सर, ये complete करके चला. अच्छा, try करो. If you are able to write, if not, you just leave it as it is. Okay. Maybe once the school reopens, I will try to increase the lectures to 2, so that we can go. When is the school reopening? But here the tomorrow timetable is who's मेरा ही है ना? हाँ, क्या टाइम? अच्छा, उसके पहले मेरा CBSE. Okay, thank you. I'll see you in the next lecture. Will do it. A nice meeting once again, Sunday with me. ऐसे तुम लोग बोले, नहीं बोले.